Hello students, good morning. How are you all? I hope you all are fine. Today in this video we are going to learn standard 6 social science and chapter number 12, that is understanding the map. Okay, it's very important chapter we can say, because day to day we are using this map. Okay, so we have to understand the map, that what is the map, how many types of maps are there, what are the uses of maps and of everything. You know very well that sometimes what happen, that we want to go from one place to another place. Okay, means we want to visit one place, but at that time we don't know anything, we don't have any information about that place. Then also we can reach over there. What is the reason? So with the help of the map we can reach and we can get the information about this. See, tourists visit different tourist destinations of Gujarat like Somnath, Dwarka, Tarnetar, Ambaji, Dhordo, Saputara, etc. What happened? Tourists मतलब the people who wants to travel. ओके, दे विजिट डिफरेंट डेस्टिनेशन, मतलब वहाँ पे उन लोगों का जो एम होता है, कहाँ कहाँ पे जाते हैं. तो सपोज गुजरात की हम लोग बात करें तो सोमनाथ, द्वारका, तरणेतर, अंबाजी, धोरडो, सापुतारा, दीज आर द फेमस प्लेसेस ओके ऑफ गुजरात. In spite of being unknown with the geographical area of tourist destinations, they can reach the destination very easily. See, what is the condition? In spite of being unknown with this geographical area, the tourists do not have the information about Somnath, Dwarka, Tarnetar, Ambaji, Dhodo, Saputara, etc. But what happened? That they can reach the destination very easily. They can reach on their places, on their favorite places. What is the reason for it? See. So the reason is only that they have map showing the tourist destinations. So it's very important. With the help of the map, you can easily reach, and even you can easily reach on the destination. Okay, they can receive information of the tourist spot destination by reading different maps. You have the different maps. Okay, political map, thematic map, scale based map. Later on we will discuss the types of map in detail. So with the help of details which is given in the map, after reading the information you can easily receive the information. In the present time, maps have proved very useful for many other objectives besides too. It's not only like it is useful in the tours, but even in present time maps have proved very useful for many other objectives also. Which objectives? See, today in the age of science and technology, you can reach any place in the world with the help of GPS, that is global positioning system. You know very well that in your mobile phone, okay, in Android phone or we can say smartphone, you have the one menu of location, okay, one function of location, or we can say map. So what that is called GPS, that is global positioning system. So it is very useful function we can say, but internet is compulsory. If you have internet, then you can easily use that map. What you have to do, suppose I am in Surat right now, suppose my starting point is Surat and I want to reach at Jamnagar, and if I don't know the roads which are there to reach Jamnagar, so what I have to do, with the help of global positioning system I have to set my starting point, that is Surat, and my destination Jamnagar. Then the whole map is there on your screen. So with the help of the internet and GPS, the full form is very important, global positioning system, you can reach at any place in the world, not only from in Gujarat to Gujarat, but even you want to go in abroad, then also GPS means global positioning system is very important. Let's understand the map in this chapter. So in this chapter we will try to learn about map. So globe of the earth is very important to study the earth, but map is more important to study any one continent, country, state, district, taluka, city or any village of the earth. See, you know very well, globe means artificial we can say map, okay, जो आपने देखा ही होगा, globe of the earth. So that is very important to study about the earth. Okay, we can say duplicate copy of the earth, like it is in a ball. But this map is very important to study any of the continent, country, state, district, taluka, city, village on the earth. Then you can easily get the information. Now from here, 3 lines are very important. The word map is also called Naksha in Hindi. So as we talk about Hindi, okay, so what is the word for map? So it is Naksha.
ओके, हिंदी में मैप को हम लोग क्या बोलेंगे, नक्शा। मैप वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड मैप्पा मुंडी। ओके, सो दैट इज important that map word is derived, basically it is the latin word। latin word कौन सा है, तो मैप के लिए latin word है मैप्पा मुंडी। so मैप्पा मुंडी is the latin word which is derived and which is used for, we can say, in latin। तो latin word कौन सा है, the map is derived from the latin word मैप्पा मुंडी। तो मैप के लिए latin word है मैप्पा मुंडी। The meaning of this piece of the cloth that can be held in the hand. What is the meaning of this mappa mundi? So a piece of cloth that can be held in the hand, मतलब एक ऐसा piece of cloth जिसको हम लोग क्या करेंगे, हाथ में कैरी कर सकते हैं। That is the meaning of mappa mundi. In the general sense, drawing of the earth surface or any one part of the earth on the plain flat paper is known as map. What is map? सो इन जनरल सेंस ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ का नहीं, अर्थ की सरफेस मतलब अर्थ के आजू बाजू बाहर का जो पोर्शन है, ऑफ वन पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन द प्लेन फ्लैट पेपर। पेपर ऐसे वैसे नहीं होना चाहिए, इट इज़ इन अ फ्लैट पेपर, इट इज़ कॉल्ड मैप। Many details of any area can be included in the map. So in map we can include so many things. So from here you have to remember the definition of map. So map is the drawing of the earth of surface or any one part of the earth on the plain flat paper is called map. Now first one is atlas map. So an atlas is a collection of maps showing various details of the earth on its larger part. See what is atlas? So collection of maps शोइंग द वेरियस डिटेल ऑफ द अर्थ, अर्थ की वेरियस डिटेल हमें देखने के लिए मिलेंगी इन इट्स लार्जर पार्ट। मीन्स कोई एक इतना एरिया है उसको जूम करके मतलब लार्ज करके दिखाया जाता है। इट कंटेन्स पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, नेचुरल एंड कल्चरल डिटेल्स। सो इन एटलास वी हैव पॉलिटिकल मीन्स हेडक्वार्टर्स and all the things, administrative मतलब management system, natural and even cultural details. Complete details of any concerned region can be known as map. See it's very important, it should be complete detail, आधी अधूरी डिटेल नहीं। जैसे आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन आंसर लिखना हो तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, देन यू आर राइटिंग 3-4 लाइन्स। ओके, इट इज़ नॉट लाइक दैट। कंप्लीट डिटेल्स ऑफ एनी ऑफ द कंसर्न मतलब रिलेटेड रीजन इज कॉल्ड मैप। Map shows important details of various regions like physical details. Now which are the physical details? So mountain, plateau, plain, river, lake, etc. Cultural, in cultural details we have transportation, industries, farming, irrigation, etc. So in the maps we have the physical details like mountain, plateau, plain, river, lake, etc. And cultural information like transportation, industries, farming, irrigation, etc. Then types of map. So there are two types of maps, thematic map and scale based map. Most important question, basically we have how many types of maps? So generally we have two types of map, thematic map and scale based map. So first one, that is thematic map. So such type of maps are prepared according to the requirement of necessary details. Whatever the requirements are there, मतलब कैसी हमें ज़रूरत है उसके हिसाब से हम लोग जो मैप प्रिपेयर करेंगे, इट इज़ कॉल्ड थेमेटिक मैप. Thematical maps are categorized into two main sections based on the natural and cultural details depicted them, natural maps and cultural maps. See, it's very important. Suppose if we are talking about maps, so basically it is divided into two parts. Which are there? So first one is thematic map and second one is scale based map. And we can divide the thematical map into two types. Which are they? So natural maps and cultural maps. राइट, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, थेमेटिक मैप, स्केल मैप। और थेमेटिक में भी हम लोग उसको डिवाइड करेंगे नेचुरल एंड कल्चरल। ओके, कल्चरल को भी आगे हम लोग डिवाइड करेंगे पॉलिटिकल, इंडस्ट्रियल एंड हिस्टोरिकल। लेटर ऑन वी विल सी फर्स्ट वन इज स्केल बेस्ड मैप. सो मैप दैट शोज फिजिकल डिटेल्स इज कॉल्ड scale based map. Now we have discussed physical details मतलब mountains, plateaus, plain, lakes, etc. So if physical details are there, so it is called scale based map. Scale based map displays means showcase मतलब दिखाना, क्या दिखाता है, तो natural landforms like mountains, plateau, plain, rivers, oceans, lakes, etc. ओके, सो नेचुरल लैंडफॉर्म्स मतलब जो बाय नेचर बने हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशन, एक्सेट्रा.
Map showing the details of the wild animals, vegetation, forest, minerals, etc. are the part of scale based map. सी वाइल्ड एनिमल की भी इंफॉर्मेशन होती है कि इंडिया के ये स्टेट में टाइगर, पीकॉक है, फिर जो भी राइनोसरस है, सो दैट इज़ दैट. देन वेजिटेशन मतलब जो हैबिटेशन है वो, फॉरेस्ट कहाँ से कौन से मिनरल, कॉल है, पेट्रोल, डीजल, सो ऑल द थिंग्स आर देयर, सो दैट इज scale based map. So in that we have topographical map. So landscape like mountains, plateaus, plains, waterways, etc. are shown in this type of map. See if topographical map is there. ओके स्केल बेस में भी डिफरेंट टॉपिक्स है टॉपोग्राफिक्स, तो जहाँ पे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वाटरवेज एक्सेट्रा आर सोन इन द मैप, सो दैट इज कॉल्ड टॉपोग्राफिक मैप. Then climate map. This map focuses on the details of climate, temperature, rainfall, winds, etc. आपने देखा होगा न्यूज़ में विंटर, समर हो या मानसून, वहाँ पे इंडिया का मैप आता है और दिखाता है कि ये एरिया में इतना टेम्परेचर होगा, ये एरिया में इतना टेम्परेचर, यहाँ पे रेन हो सकती है, क्लाउडी एटमोसफियर है, सो दैट इज़ क्लाइमेट मैप. देन एस्ट्रोनॉमिकल मैप. एस्ट्रोनॉमी विच इज़ कनेक्टेड विद द स्पेस. सी इंफॉर्मेशन अबाउट द कैलेस्ट्रियल मतलब स्पेस की जो भी थिंग्स है, लाइक प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स, गैलेक्सीज, स्टार्स, कॉन्स्टेलेशन मतलब अ प्रॉपर ग्रुप ऑफ द स्टार्स विच क्रिएट द डिफरेंट शेप आर सोन इन द एस्ट्रोनॉमिकल मैप. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन से सपोज यू हैव लैंडस्केप मतलब जो लैंड से लेके मतलब जो भी अलग अलग फॉर्म्स है तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी टॉपोग्राफिक मैप में. ओके क्लाइमेट की है मतलब क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड्स, सो क्लाइमेट. देन एस्ट्रोनॉमिकल तो वहाँ पे होगी इंफॉर्मेशन प्लैनेट, सैटेलाइट्स, गैलेक्सी, स्टार्स, कॉन्स्टेलेशन एक्सेट्रा. देन सेकेंड वन दैट इज कल्चरल मैप. सो द मैप विच आउटलाइंस द मेन मैन मेड डिटेल्स इज कॉल्ड द कल्चरल मैप. सी कल्चरल मैप आउटलाइंस मतलब इंडिकेट करता है मैन मेड डिटेल्स मतलब जो डिटेल्स हम लोगों ने, मैन ने क्रिएट की है, दैट इंफॉर्मेशन like outlines in the cultural maps. These map outlines various human activities. So which type of human activities? See the map of state, farming, population, transportation are the examples of cultural map. See population जो है वो man made मतलब वो हम लोग indicate करेंगे फार्मिंग, फिर जो भी स्टेट्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स आर शोन इन द कल्चरल मैप. Okay, so in that we have political map. So the map which shows the details of continent, country, local administration and their frontier are called political map. आप लोग शॉप पे मैप लेने के लिए जाओगे तो वो पूछेंगे, आप बोलोगे कि पॉलिटिकल मैप दो तो क्या देंगे. सपोज आपने इंडिया का मैप मांगा तो उसके अंदर हर एक स्टेट का नेम, उसका कैपिटल वो होगा, तो डिटेल्स ऑफ कॉन्टिनेंट होंगे या कंट्री उसके नेम, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कहाँ पे ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, लाइक दैट, एंड फ्रंटियर मतलब उससे आगे की जो भी इंफॉर्मेशन होगी दैट इज देयर इन द पॉलिटिकल मैप. देन इंडस्ट्रियल मैप. सो दिस मैप शोज द डिटेल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, फ्रेज्ड हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन एक्सेट्रा. कहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, आयरन इंडस्ट्रीज है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, तो कौन कौन से इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पे है. विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियल मैप वी कम टू नो अबाउट दैट थिंग. The last one that is a historical map. So map which shows history of religion and national administration is called historical map. जहाँ पे हमें हिस्ट्री देखने के लिए मिलेगी ऑफ रिलीजन मतलब पर्टिकुलर एरिया और नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन. ओके सो दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल मैप. अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर टू टाइप्स ऑफ मैप ऑन द बेसिस ऑफ स्केल दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट लार्ज स्केल मैप and we have small size scale. Okay, so you have to remember these things. So basically we can divide the map into how many parts? So two parts, thematic map and then we have scale based map. Okay, then in thematic map we have natural map and cultural map, and even cultural maps are also divided into the various parts like political map, industrial map and historical map. I hope it is clear to you. Still you have any doubt, so you can write in comment box. So I'll try to solve your doubts and problems. And thank you for watching the video. Have a nice day.